इट्स अ वेरी सैड डे फॉर मी। कैब वाले ने चोदू बनाया मेरे को, बोला कि आज खुला है। सो आई एम इन ब्राज़ील राइट नाउ विद क्राइस्ट दी रेडीमर। पीछे ताजमहल भी है एंड आई डोंट नो व्हाट आर दिस। किसी सेना के लोग होंगे बट इट्स क्लोज। साला कुनाल। Well, I just finished watching Dark and it's really dark रे। मुझे बस यही जानना है कि ये राइटर कौन सा गांजा मार के लिख रहा होगा। मुझे वो चाहिए। साला जिंदगी सवर जाएगी मेरी। लाइक थिंक अबाउट इट, लाइक पीपल हु वॉच डार्क, they need to know so many characters, timelines, the science behind it. Well, I'm not gonna talk about dark anymore. This is not no spoilers given. Well, everything going great this quarantine. So far so good. Except for the fact that I'm losing my fucking mind right now. I think the lockdown would hit by the time I upload this podcast in Assam. Well, if you're watching it after the fuck all intro I gave, I want you to know I really appreciate your time, which you have in abundance right now, and I really love you. I hope the internet is working and please do not skip this. Watch till the end. मेरे दोस्तों को तो देखना ही पड़ेगा, cause if you are skipping this then प्लीज भाई, मैं भाई समझ के बोल रहा हूँ दोस्तों, प्लीज आप वीडियो देखिए, प्लीज भाई। हाँ वेल वेलकम टू द पोस्ट। हाँ फक, फिर से देना पड़ेगा। टेक टू, रेडी। हाँ, वेलकम टू द पॉडकास्ट दे गवे, जहाँ मैं आपको घंटा भी कुछ नहीं दिखाने वाला। Yeah, most of the time I will talk about my thoughts, my experience, present a perspective. Well, I'll try to present a perspective. uh, talk about issues which are not addressed. ये मोटिवेशनल स्पीच वाला पॉडकास्ट नहीं है। इसके लिए बहुत सारे हैं, मैं नहीं हूँ वो। यहाँ पे चूतियागरी नहीं होगी, थोड़ी बहुत रहेगी बट यू नो, आई होप यू पीपल एंजॉय इट। अगर नहीं कर रहे हो तो क्या ही कर सकता है। वेल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फॉर दोज हु डोंट नो मी। पर क्या ही फर्क पड़ता है, देखने वाले तो सिर्फ दोस्त ही होंगे। मैं चाहे तो तुम ही देख लेना प्लीज, नहीं तो बहुत मारूंगा। नहीं मारूंगा, जो कर रहा हूँ। तो हाय, माय नेम इज अविदे एंड आई एम 23 years old. दैट्स इट, दैट्स माय इंट्रो। लाइक मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा दैट आई एम जॉबलेस आफ्टर इंजीनियरिंग, सो आई एम डूइंग दिस टू किल माई फ्री टाइम, टू मेक सेंस ऑफ माई टाइम। नहीं तो घर वाले बहुत ताना मारते हैं, क्या बोले। Jokes apart, like not having a job after engineering, that should be the normal, right? Like वही तो हो रहा है दुनिया भर में। हैविंग ए जॉब जस्ट आफ्टर इंजीनियरिंग, तब ना लोगों को पूछना चाहिए क्या हो गया तुझे ब्रो, सब ठीक है ना। जाओ एमबीए करो, पैसे को आग लगाओ। नो ऑफेंस टू द एमबीए पीपल, ओके। वेल, इट हैज बीन अ फैंटास्टिक ईयर टू बी ऑनेस्ट। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर एलियन इन्वेजन। सीरियसली, लाइक आई विल नॉट बी सरप्राइज इफ दैट हैपेंस। मैं तो बोलूँगा ये तो होना ही था। जादू तुमको इतना देर कहाँ लग गया, उड़ा दो प्लेनेट, खत्म करो। Like people are obsessed about 2020, cursing it like hell. Even me, like if 2020 was a person, I would have just said him go fuck yourself, please. But I think all these tragedies happening all around the world, starting from the Australian bushfire, coronavirus, cyclones, the incident of elephant in Kerala, the George Floyd incident, the death of Sushant Singh Rajput, मुझे लगता है all these events somewhat occurs every year, but because we are in this lockdown and pandemic, we're just having much more time to be concerned about these topics and talk about these issues.
अब अगर लॉकडाउन या कुछ नहीं होता, people would have noticed these events, but they won't have talked about it in this manner. Like how every social issues which are not treated properly are being treated right now. But our generation should look at the brighter side of 2020. I'll explain you how and why. देखो, कल को अगर मेरा बच्चा हुआ, जो कि होना तो चाहिए, सपोज, और एंड ही आउट ऑफ नोवेयर केम टू मी एंड आस्क्ड कि पापा पापा हम लोग इतना गरीब क्यों है, देन आई विल एक्सप्लेन हिम लाइक हाउ वी सर्वाइव 2012 डिजास्टर. प्रूफ के लिए मूवी दिखा दूंगा, बच्चे को क्या ही मालूम पड़ेगा. And then how everything was going right as we are rebuilding from the trash till 2020, where this pandemic comes in effect, and we survived that. But I had to throw everything, my stuffs, my money, because this those all were Chinese products. See, I will explain them how you find your own excuse. I am good at this. हाँ, तो बहुत ज़्यादा फालतू बातें हो गई. कमिंग बैक टू द टॉपिक, a lot of things changed compared to previous years. People talking about mental health. Okay, this podcast is not about mental health. Okay, I'm not an expert in this field, so I'll not talk about it. I will just say that I have been mean to people in the past, and I'm sorry for that. uh, though I don't want to be that person who talks about mental health but is mean in real life. So you know who you are, to start being kind to people. That's it. So a lot of things changed, like being at home for the longest time. I remember, like for me, the past 6 years I have been living in hostel. Here's the thing: when you start living in a new place, leaving your house, leaving your comfort zone, at the beginning you get this mixture of emotion, जिसमें थोड़ा सा डर और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है. आई डोंट नो अबाउट पीपल, आई हैड दिस. It's like losing virginity. Okay, for those who didn't have sex, how to put it? Yeah, they the first time you had a cigarette. Yes, like कैंसर हो सकता है, पर फिर भी फूकेंगे. That's the thing. Like that's the thing I'm talking about. The sense of liberty, my friend. The first time, you believe or not, you are on your own. You control what's right and what's wrong for you. There's no one to tell you anything. You choose your path. नई जगह, नए लोग. This includes everything, like going through the process of adaptation, which includes acceptance in friend circle, making new friends, judging each of your friends' characteristics, like कौन सबसे हरामी, कौन कंजूस, कौन है ठरकी, the fitness freak, and the most important, the one जो सबकी लेता हो. एंड देखते देखते वी बिकम पार्ट ऑफ ए बिग फैमिली. मेरी जर्नी के बारे में बोलूँ तो आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट. आई हैड ऑल काइंड ऑफ पीपल अराउंड मी एंड वॉज पार्ट ऑफ ए एलीट ग्रुप जो सबकी लेता था इम्पार्शियली. लाइक ग्रुप का मोटो ही था ना, सबकी कांड मारना अपना परम धर्म. What I am saying is, we all are missing that part of our life, the liberty of doing whatever we want, like the way we want, और कोई कुछ नहीं बोलने वाला हो. देखो, इसका मतलब ये नहीं कि जाके खून कर दो. You know what I mean. I know the home sweet home thing, और घर के खाने का स्वाद इज इनकम्पेरेबल. बट यार, हॉस्टल में रहकर हॉस्टल के खाने को चूतिया बुलाना, सिटिंग विथ योर फ्रेंड्स, उस चीज़ का वैल्यू ना हॉस्टल के लास्ट मील में ही मालूम पड़ता है. यू कांट इमेजिन हाउ मेनी ऑफ अस वांट टू रिलीव दैट मोमेंट अगेन. मुझे आज भी याद आते हैं, लाइक हाउ एवरी डे वी यूज टुगेदर इन ए रूम, द रूम, यू नो, जहाँ पे भिन्न भिन्न प्राणी आते थे, कुछ जानवर भी आते थे. बट द रूम वेयर we had discussion about basically everything and everyone.
लड़कियों की बातें, सेक्स की बातें, बेकार की बातें, कौन चूतिया है, किसकी लेने वाले है, और लेने वाला बकरा भी उधर ही बैठा रहता है। एंड वी यूज टू मेक श्योर लाइक इनडायरेक्ट रेफरेंस, ताकि जिसकी ले रहे हैं उसको खराब ना लगे। बट somehow इट बिकम्स ऑब्वियस एंड जिसकी ले रहे होते हैं उसकी गान फट जाती है। देखो मुझे मालूम है बिकॉज मेरी बहुत ले चुके हैं लोग, तो आई नो द एक्सपीरियंस इज वेरी मच बैड। तो एवरी सेम दैट रूम इज टू गेट फील बिफोर डिनर, एंड यू नो व्हाट टाइप ऑफ डिस्कशन हैपेंस। तो लोगों को जितना डर लगता था उस रूम में आने के लिए, उतना ही ज़्यादा देवर इंक्यूजिटिव टू बिकम ए पार्ट ऑफ ए डिस्कशन इन दैट रूम। यस, दैट्स हाउ स्पेशल दैट रूम्स वाज। आई फील लाइक हर ग्रुप में ऐसा एक रूम होगा विच इज मच मोर देन देयर ओन रूम, which holds much more memories than their whole life. Now, as I think about it, the only good thing that might have happened with us is that we graduated. Yes, the class of 2019. Maybe good, maybe bad. I can't really debate about that. See, I had a very perfect college life. I made really great enemies, also made really good and great friends, which are families by the way, right now. Uh, I had two very beautiful love interests. They were really beautiful, and I wish them the very best in their life. They are not with me anymore. लाइक जिंदा है, मतलब मेरे साथ नहीं है, ब्लॉक कर चुके हैं, मतलब मरे साले। जोक्स है पार्ट, आई had very perfect farewell. I wore formals and I looked very cool that day. Like मुझे तो cool ही लगा था, बाकी लोगों का नहीं मालूम. And all this were happening, and finally that day came where we had to say goodbye. Now I think like why didn't we understand this at the very beginning? Like इसका भी एक expiry date है. You can ask hundred of people out there like what is the only thing they miss about their college life. They all will say the same thing. They all will say that the moments we had fun with our friends, doing ridiculous things. Like be it be partying like hell, drinking, smoking, hanging out with our friends, cooking with our friends, or like all sort of things, gaming and all. Yes, this podcast is all about those friends in your life that has made life some way or the other memorable for you. All obviously not being offensive, okay. I know for the class of 2020 it has been really hard for you people. Like more than anything, I know how badly you want to go back to your normal life and just enjoy the final few days of your college. Like getting a farewell, bidding final goodbye to your friends. But many of you are just wondering was that the last time you saw your distant friend slash enemy? Like recently, I asked my friend who is a junior, what would you do if you are allowed to go back for just one day? She said, it would take more than a month for me to return. To the class of 2020, this pandemic has taken enough from you. Don't let it kill your spirit. Hang in there. Like we all are praying for things to get better. You never know. Like one day you wake up and your phone is ringing and your friend asks you, और कब जाना है hostel? Well, you might think that I'm a freak, okay, but sometimes when I'm alone, I wonder, like, I think how it was before all this thing happened. I see the room and my friends talking to each other after dinner. ধ্ৰুৱ asking Godang, জ্বলাব কিবা আছে নেকি? ধ্ৰুৱ saying ৰ'বা চেল্ফত এটা লাইটাৰ আছিলে। কৌশিক asking ভাইটি, পঢ়াচোন, ক'ত যোৱা? বহুত টাইম আছে পঢ়িব। Whereas spies are screaming from a distance. আজি শ্বৰ্টটোৱে মাৰি দিওঁ নেকি? With that visual, I want to leave you. And that's a wrap in the episode. I
hope you liked it, and if you liked it, please write down in the comment section. Ghatiya Chutia, I appreciate every comment. So I'd love to hear from you, and meet you in the next episode of Dekh. And we all sit around the fire. We feel a little warmer now. And we all sit around the fire. We feel so much better now. And we all sit around the fire. We feel a little warmer now. And we all sit around the fire. We feel so much better now.